हेलो फ्रेंड्स वेलकम। तो आज आपणकर क्लास 1 रोची शिव शक्ति बैच रो आपणकर प्रैक्टिकल बेस्ड रो आपणकर क्वेश्चन रहइबो। आ आपण माने जो माने बैच जॉइन करनांती तो एई नंबर आपण माने बैच जॉइन करने भी म आपण को ऑलरेडी कहि देछि। आपण माने निश्चिंत बैच जॉइन करनियंतु जोटी आपण माने पे हेल्पफुल हो आगु एग्जाम सब पीडीएफ आपण को मिल जिवो त क्लास मिल जिवो। मेन होची आपणकर जो टॉपिक रो आपणकर क्वेश्चन हाउची सेही टॉपिक रो आपणकर प्रिपरेशन करा जाउची जेंते आपणकर ओडब्ल्यूएस रे आछि जो सिलेबस देछि से सिलेबस अनुसार आपणक होउची ता सहित आपणकर आरआरबी रे मध्ये आपणकर आसीबा आगु एग्जाम को नै कि आपणकर मेडिकल पोस्ट पकै छथि आरआरबी रे जो नर्सिंग भारतले आपणकर ता सहित स्टाफ नर्स आपणकर फार्मेसी सब आपणकर पोस्ट थिला। तो से आप जो मैंने अप्लाई कर कि हेल्पफुल हम आगु को यही सब आपणकर ये बैच टी भी हेल्पफुल हम और जो मैंने जॉइन करा चाहते निश्चिंत मेसेज करूँ और जॉइन करनी जल्दी जल्दी जॉइन करनी सब पीडीएफ बहुत किसी गुड़े पीडीएफ आपणकर पे पाईगले तो आपण मैंने निश्चित जॉइन करूँ। आज पार्टिकल बेस आपणकर क्वेश्चन नहीं कि आसमें कि जोटा कि बहुत हेल्पफुल होता है आपण को एग्जाम को नहीं कि एग्जाम रे बोधा ए क्वेश्चन आपन देखिया को मिलता है। तो देखंतु आपण क्वेश्चन नंबर आमे आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग असेसमेंट एमती आपनकर क्वेश्चन आसी थाए आपनकर कोथरे आपनकर रिक्वायरमेंट रे। तो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को आपण निश्चित देखिया निहाती दरकार। तो एठी आपनकर एक्सप्लेनेशन सहित आपनकर रहउची क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर आपनकर 1 देखो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नर्सिंग असेसमेंट गोल कौन रोची तो टू डायग्नोस्टिक मेडिकल कंडीशन diagnose medical condition तासो to development a plan of care to evaluate the effectiveness of treatment to identify the patient physical and emotional need। तो करेक्ट आंसर है जो आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी टू आइडेंटिफाई द पेशेंट फिजिकल एंड इमोशनल नीड। पेशेंट रो फिजिकल अवस्था को देखिबा ता सहित आइडेंटिफाई करिबा ता सहित इमोशनल से कोन चाहूची सेटा भी निहाती जानिबा दरकार। तो नर्सिंग रो असेसमेंट रो ई सब आपन को रूल्स रहउची ये रे प्राइमरी गोल देखो एटी आपन लिखा जाईची नर्सिंग असेसमेंट इज द प्रोसेस of gathering information about a patient physical emotional and social needs। फिजिकल आउ इमोशनली कौन चाहूची आउ सामाजिक स्तर रे से कौन चाहूची सेटा कौन ताकू दरकार होची तो सेटा निहाती एटा नर्सिंग असेसमेंट रे रहउची। तो प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग असेसमेंट टू आइडेंटिफाई दिस नीड्स एंड डेवलप अ प्लान ऑफ केयर एंड एड्रेस देम। तो ये एक्सप्लेनेशन को आपण लिखिबे ये सब प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आपण रहउची। क्वेश्चन नंबर 2 ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ what is the most appropriate nursing action एटी पचारछि administer oxygen and call for emergency assistance assess the patient vital sign and medical history provide the emotional support and reassurance तापर को encourage the patient of ambulate and move around। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है administer oxygen and call for emergency assistance जोटी कि आरो रहउछि आंसर क्वेश्चन नंबर 2 चेस्ट पेन हेले। तो explanation देखो in this scenario the patient is experiencing symptoms of potential heart attack of other life threatening condition। the most appropriate nursing action is to administer the oxygen and call for emergency। तो एटा आपण निहाती ए जो सिचुएशन आसीबो पेशेंट रो गोटे तो ता पई कि नर्सिंग मानकर ए एक्शन टा निहाती हेबा दरकार जोटा कि ऑक्सीजन एंड कॉल फॉर इमरजेंसी असिस्टेंट मान को कॉल करिबा सच एज ए कॉलिंग ए कोड ब्लू और एक्टिवेटिंग द इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम जोटा कि आपन को रहउची। क्वेश्चन नंबर 3 आपण माने देखंतु ए पेशेंट इज प्रिस्क्राइब मेडिकेशन दैट कैन कॉज द हाइपोटेंशन व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन मॉनिटर द पेशेंट ब्लड प्रेशर रेगुलरली। ता सहित ऑप्शन बी रे रहउची आपण को एडमिनिस्टर द मेडिकेशन विथ फूड टू रिड्यूस साइड इफेक्ट। सी रे रहउची एनकरेज द पेशेंट टू एम्बुलेट and move around the regularly। ऑप्शन नंबर डी होची प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड रीअश्योरेंस टू द पेशेंट। तो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर रेगुलरली जोटा कि आपण मानकर मॉनिटर करिया दरकार ब्लड प्रेशर रेगुलरली। तो एटा कोथरे रहउची आपण हाइपरटेंशन रहिले। Explanation in this scenario the patient is prescribed a medication that can cause hypertension or low blood pressure
द मोस्ट appropriate nursing action is to monitor the patient blood pressure। तो यही क्षेत्र में आपण मान कौन करेंगे ना तार ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करा जिवो जोटा कि नर्सिंग मानकर सेटा एक्शन रहउची मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन और रेगुलरली टू क्विकली आइडेंटिफाई एनी चेंजेस टेक एप्रोप्रिएट एक्शन किछि आपण चेंजेस आछी कि नै से आपको मध्ये चेक करियो। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी and agitation, what is the most appropriate nursing action? Administer of the sedative medication, provide the emotional support and reassuration, encourage the patient to ambulate and move around regularly, use physically restraint to calm the patient। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आप करेक्ट प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट एंड रिअश्योरेंस जोटा कि आपण माने नर्सिंग रो आपनकर एक्शन रहिबो एई क्षेत्र रे। तो एठा देखंतु एक्सप्लेनेशन इन दिस सिनेरियो द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एंजाइटी एंड एजिटेशन द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन टू प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट करिबा एंड रिअश्योरेशन सच एज द एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी दिस कैन हेल्प द काम द पेशेंट एंड रिड्यूस देयर एंजाइटी। ताको शांत रखिबारे सहाय्य करते आ एंजाइटी को ह्रास करते। तो क्वेश्चन नंबर 5 ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ए सीजर, what is the most appropriate nursing action? Administer oxygen and call for emergency assistance, protect the patient head and body from the injury, provide the emotional support and reassurance to the patient, attempt to restrain the patient to prevent injury। The correct answer is option number B, protect the patient head and body from injury। The explanation in this scenario, the patient is experiencing a seizure. The most appropriate nursing action is to protect the patient head and body from injury, such as by placing a pillow under the head of turning them onto their side। तो ये सब एक्सप्लेनेशन आप रोचे एक्सप्लेनेशन को आपने नोट करेंगे जहाँ भी आपन को पीडीएफ मिलूँ ताको आप निश्चिंत नोट करूँ जोटि आपंकर एग्जाम पाई हेल्पफुल हम आउ प्रिपेरेसन करूँ केमी कौन नोट करेंगे अलरेडी आप कही सारी आप क्वेश्चन को रेड पेन रे लिखिबे सहित आप आंसर ब्लैक पेन रे लिखि आप नोट करूँ आ नोट कले ही आपन मन रहा खाली आप पीडीएफ नहीं कि रखिले हेनी पीडीएफ की यूटिलाइज करने निहाती दरकार। तो ये क्वेश्चन आपनकर गला क्वेश्चन नंबर आप आसला क्वेश्चन नंबर 6 ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ए सीवियर allergic reaction, what is the most appropriate nursing action? allergic रही सीवियर allergic तो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन कौन रही नर्सिंग administer oxygen and call for the emergency assistant, provide the emotional support and reassurance to the patient, administer the antihistamines and corticosteroid ता सहित आप यूज फिजिकल रिस्ट्रेंट टू द calm the patient। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है administer the oxygen call for emergency assistant। एक्सप्लेन जोटा कि सीवियर एलर्जिक हेले तो यहाँ भी नर्सिंग रो एक्शन गोटे रहिबो। This scenario, the patient is experiencing the severe allergy reaction, which can be life threatening. The most appropriate nursing action is to administer oxygen and call for the emergency assistant। Question number 7: a patient is experiencing chest pain and shortness of breath. What is the most likely diagnosis? Myocardial infarction, pulmonary embolism, pneumonia, chronic obstructive pulmonary disease, COPD जोटा कि आपन कोन रहउची। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन जोटा आपन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रहि जबो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। Explanation in this scenario, the patient is experiencing the chest pain and shortness of the breath, which are common symptoms of a myocardial infarction, heart attack जोटा कि आपन कह जाय। एक्सप्लेनेशन सब आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ए पेशेंट इज प्रेस्क्राइब मेडिकेशन दैट कैन कॉज द नेफ्रोटॉक्सिसिटी, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर द पेशेंट रेनाल फंक्शन रेगुलरली जोटा कि रेनाल फंक्शनटा रेगुलरली जो होची कि नहीं ताको मॉनिटर करबा नर्सिंग रो गोटे एक्शन रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन एटी देखंतु the explanation ta dekhiba in this scenario the patient is prescribed a medication that can cause nephrotoxicity, kidney damage. That's most appropriate nursing action is to monitor the patient renal function regularly। Question number 9 a patient is experiencing
a stroke, what is the most appropriate nursing action? Administer oxygen and call for the emergency assistant. Provide the emotional support and reassurance to the patient. Administer anticoagulants and antiplatelet agents. Use the physical restraint to calm the patient. Correct answer is option A. Administer oxygen, call for emergency. In this scenario, the patient is experiencing a stroke which require the immediate medical attention. Mm, the most appropriate nursing action is to administer oxygen and call for emergency assistance. Question number 10. A patient is experiencing hypoglycemia. What is the most appropriate nursing action? Administer insulin and monitor blood glucose level. Provide the emotional support and reassurance to the patient. Administer oral hypoglycemic agent. Encourage the patient to ambulate and move around regularly. Correct answer is option number A. Administer insulin and monitor blood glucose level. जोटा ऑप्शन नंबर ए आपनको करेक्ट आंसर है जोटा हाइपरग्लाइसेमिया रे आपण मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन हबा निहाती दरकार. ऑप्शन नंबर एडमिनिस्टर इंसुलिन and monitor the blood glucose level. Explanation: in this scenario, the patient is experiencing hyperglycemia, high blood sugar. Most appropriate nursing action is to administer insulin and monitor the blood glucose level. Next question आपणकर question number 11. A patient is experiencing severe abdominal pain and vomiting. जदि आपण पेन करछि कि बांती करूछि तो तार मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस कोन हबो एक्सपीरियंस सिवियर एब्डोमिनल एंड वोमिटिंग. तो अपेंडिक्टिस आपणकर कोलियोसिटिस ना आपण पैनक्रियाटिस आपणकर गैस्ट्रोएंटरिटिस. तो करेक्ट आंसर है अपेंडिक्टिस जोटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर. इन दिस सिनेरियो द पेशेंट इज एक्सपीरियंस सिवियर एब्डोमिनल पेन एंड वोमिटिंग व्हिच कॉमन इज सिम्पटम्स ऑफ अपेंडिक्टिस जोटा आपण करेक्ट आंसर रहिला. Question number 12. A patient is prescribed a medication that can cause the hypocalmia. What is the most appropriate nursing action? Monitor the patient's potassium level regularly. Administer the medication with food to reduce the side effect. Encourage the patient to ambulate and move around regularly. Provide the emotional support and reassurance to the patient. The correct answer आपण माने कोन हे जो ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर द पेशेंट पोटासियम लेवल रेगुलरली जोटा कोथि पई कि ना आपणकर हाइपोकालमिया जोटा हेले मेडिकेशन कौन करो तार नर्सिंग एक्शन कौन एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन कौन रहिबो ना मॉनिटर द पेशेंट पोटासियम लेवल रेगुलरली चेक करिबाटा मॉनिटर करिबा. एक्सप्लेन इन दिस सिनेरियो द पेशेंट इज प्रेस्क्राइब द मेडिकेशन दैट कैन कॉज हाइपोकालमिया. द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज टू मॉनिटर द पेशेंट पोटासियम लेवल रेगुलरली. क्वेश्चन नंबर 13. ए पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग ए सीजर. व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन? A रही जो protect the patient head and body from the injury, administer oxygen, call for the emergency assistant, provide the emotional support and reassurance to the patient, use physical restraint to calm the patient. Option number A है आपन protect the patient head and body from the injury जोटा कि कोथि पे कि सीजर पे जोटा ऑलरेडी आपन रिपीट हे जाइछ क्वेश्चन टा. क्वेश्चन नंबर 14. A patient is prescribed medication that can cause the thrombocytopenia. Thrombocytopenia. What is the most appropriate nursing action? Monitor the patient platelet count regularly. Administer the medication with food to reduce the side effect. Encourage the patient to ambulate and move around regularly. Provide emotional support and reassurance to the patient. The correct answer is option number A. Monitor the patient platelet count regularly. Explanation of in this scenario the patient is prescribed a medication that can cause thrombocytopenia. The most appropriate nursing action is to monitor the patient platelet count regularly जोटा कि आपनकर explanation रहिबो. Question number 15. A patient is experiencing severe burn. What is the most appropriate nursing action? Administer oxygen for the call for emergency assistance. Provide the emotional support and reassurance to the patient. Apply the topical antibiotic and dressing to the affected areas. Use physical restraint to calm the patient. The correct answer option है जो administer the oxygen, call for the emergency assistance. यदि severe burn ହେଇଛି तार जळी जाइछि किछि जळी जाइथिले तो आपण नर्सिंग मानकर रिएक्शन हबो administer oxygen, call for the emergency assistance. Explanation: in this scenario the patient is experiencing the severe burn. The most appropriate nursing action is to administer oxygen for the call for emergency assistance. जोटा कि आर एक्सप्लेनेशन रहिबो. Next question number 16. The patient is experiencing severe respiratory distress. Respiratory श्वासक्रिया किछि आपनकर प्रॉब्लम रहले. What is the most appropriate nursing action? Administer oxygen for the call for emergency assistance. Provide the emotional support and reassurance to the patient. Encourage the patient to ambulate
and move around the regularly, use physically restrain the calm the patient, administer oxygen, call for the emergency assistance, जोटा आपन करेक्ट आंसर रहइबो। बहुत मात्रा जो क्वेश्चन रो आंसर रहउची एई सब सिचुएशन रे नर्सिंग रो एक्शन जोटा कि कॉल फॉर इमरजेंसी एंड असिस्टेंट जोटा कि आपन अधिका क्वेश्चन रो ऑप्शन रहउची। तो एई थरो आपन क्वेश्चन आसे तो आपन कंफ्यूज हेबेनी, यदि आपन भलो भाबे नोट करी पढिथिबे तो निश्चिंत करि परिबे। तो पेशेंट इज प्रेस्क्राइब द मेडिकेशन दैट कैन कॉज द हाइपरकालमिया, एटा ऑलरेडी आपन रिपीट हेची। तो करेक्ट आंसर कोन हेजिबो आपनकर पोटेशियम लिवर रेगुलरली कालमिया हेले हाइपोकालमिया। Next question, patient is experiencing severe headache, the stiff neck. What is the most likely diagnosis? Meningitis na encephalitis, supraconinoid hemorrhage ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି cerebral vasculitis। तो करेक्ट आंसर आपण ହେଇଛି ऑप्शन नंबर ए meningitis जोटा ଆପଣଙ୍କର करेक्ट आंसर रहइबो। The explanation, in this scenario the patient is experiencing a severe headache and stiff neck. The most likely diagnosis is meningitis, which is inflammation of the protective membrane covering the brain and spinal cord. Question 19, the patient is prescribed medication that can cause hypoglycemia, जोटा आपण ऑलरेडी डिस्कशन हे सारछि। आर करेक्ट आंसर, मॉनिटर पेशेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल रेगुलरली। हाइपोकालमिया हेले आपनकर पोटेशियम लेवल को चेक करा जाय रेगुलरली। एटा हाइपोगालमिया जोटा अछि, हाइपोगालसेमिया जोटा अछि सेटा आपनकर कोन होइते ग्लूकोज लेवल को चेक करथे। The patient is experiencing severe pain and discomfort. What is the most appropriate nursing action? तो करेक्ट आंसर आपण मानक हे जो ऑप्शन नंबर एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब, जोटा के ऑप्शन नंबर ए आपन को करेक्ट आंसर रहइबो। एक्सप्लेनेशन देखो, इन दिस सिनेरियो द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग द सिवियर पेन एंड डिस्कम्फर्ट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज टू एडमिनिस्टर पेन एंड मेडिकेशन आर प्रेस्क्राइब। तो एटा आपनकर थिला प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन किछि आपनकर नर्सिंग ऑफिसर को नेकी। आउ जो माने बैच जॉइन करने निश्चित जॉइन करने सब पीडीएफ आपण मानक सेठी मिल जिवो। आउ बैच ए नंबर आपण मेसेज कर परिबे 6372270928 ए नंबर आपण मेसेज करी बैच जॉइन कर परिबे। जो माने इंटरेस्टेड अछंती निश्चित जॉइन करंतु, आगु को भी आपण मन हेल्पफुल होबो। जति आपण रिक्वायरमेंट आसे और जहां भी एग्जाम अछि अपकमिंग एग्जाम सेतरे भी आपण हेल्पफुल होबो। तो इंपोर्टेंट टॉपिक थला आपनकर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को नेकी वीडियो भल लागित लाइक और शेयर करंतु। हम चैनल रे प्रथम तरह हेतले चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एई भली कंटेंट पे बेल आइकन को क्लिक करंतु जद समस्त वीडियो नोटिफिकेशन आपन पारे पहुंच परिबो। धन्यवाद।